This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are going to start a very important structure, and I'll also give you an assignment by the end of this class, and you have to submit it within 24 hours. आप लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में प्रेजेंट सिंपल को स्टडी किया था। कोई ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं, कोई ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमको बार बार निभानी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे सर पर है और हमको बार बार वो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। सोचें ऐसी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। अब अगर मैं अपनी जिम्मेदारी की बात करूं, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I have to manage my classes. I have to manage my routine. I have to manage everything. I have to manage so many things in my life. I have to manage so many things in my life. I have to, 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 I have to. Yes. आप लोगों को क्या करना पड़ता है? Sir, I have to. Sir, I have to. अपनी जिम्मेदारी बताएं। Sir, I have to. Sir, I have to. Yes, Rabia, I have to. I have to. I have to. आवाज आ रही है मेरी? I have to. 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 Am I audible to all of you? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो yes sir. Yes, sir. लड्डू है बेटा? Sir, I have raised my hand. अच्छा जी, बताइए। I have to get dressed my children. Yes, I have to make dinner every day, and I have to serve food to my in-laws, my husband, and I have to get up early in the morning. Okay. Excuse me sir, ये have to जबरदस्ती वाला है कि हमें कुछ जबरदस्ती करना पड़ता है जो हम मतलब हमारा दिल नहीं चाहता? जिम्मेदारी। ये कौन से वाला है? ओके जिम्मेदारी। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर जो आपको निभानी पड़ती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, अगर आप सोचना शुरू करें, आप जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझें। I have to. Yes, Pariya. Sir, I have to wake up early in the morning. I have to take classes every day. I have to offer salah. So is this right that I have to offer salah? Allah push. It is absolutely right. Next, I have to, Mariam, I have to. Mariam, I have to. Yes, sir. Assalamu alaikum. My husband has to go to office every day. My kids have to go to school every day. I have to prepare a dinner every day. And my father has to go to his office every day. And I have to cook food every day. I have to wake up early every day. That's very good. That's very good. Yes, Neera Fatma. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. How are you? Fine.
I have to. I have to take responsibilities of my kids. I have to prepare my report cards for the upcoming result day. I have to cook food for my kids. I have to start planning for my next year's vacations. I have to take care of my mother's health. I have to I have to plan a visit to the ENT specialist. I have to go for the grocery. I have to take care of my kids every day. I have to help my kids and their academics. Okay, that's very good. Yes, Hiba, I have to. I have to take classes every day. I teach students every day. I have besides the Quran daily. I have to breakfast daily. I I have have to to get take up breakfast. every. I have to Ji sir. take breakfast daily. Okay, sir. I have to take breakfast daily. I have to get up daily. I have to take rest daily. I have to clean my room daily. ओके दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आप अगर देखें तो आपके पास आ रहा है डोंट हैव टू और डजंट हैव टू। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको नहीं निभानी होती, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना होता। आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डोंट हैव टू डू जॉब, मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ती। दादा का पैसा इतना है कि बस वही चल रहा है। आई डोंट हैव टू डू जॉब। आई अभी तो अब्बा का पैसा खर्च करना शुरू नहीं किया, अभी तो दादा का ही चल रहा है। आई डोंट हैव टू कुक फूड। आई डोंट हैव टू डू जॉब। शी डजंट हैव टू डू डिश वॉशिंग। आपके जिंदगी में ऐसी कोई है जिम्मेदारी जो आपको नहीं निभानी पड़ती? सर आई डोंट हैव टू। सर आई डोंट हैव टू। आई डोंट हैव टू। I don't have to cook. Cooking I have. I don't have to. I do not have to cooking. I don't have to. I don't have to. I don't have to do home chores daily, but in the in the absence of a maid, I have to do that. I don't have to give pick and drop to my kids. I don't have to make lunch. I don't have to. That's I it. don't. I forgot. Thank you very I much. don't have to watch this movie. I don't have to watch movies. मुझे फिल्में नहीं देखनी पड़ती, जिम्मेदारी नहीं मेरी ऐसी है। Absence of obligation. I don't have to water plants. I don't have to cook food. I don't have to buy groceries. I don't have to buy an egg. I don't have to buy eggs. Okay, groceries. I don't have to buy anything for my home. But I have to go to the superstore once in a month, and I have to pay the bill. I have to handle the trolley. I have to follow my wife. Yes. Next. अब आ जाए question. Sir, do you have to? 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 Yes, Mariam, Neera Fatma, Mrs. Akif Faria. Do you, sir, do you have to? Sir, do you have sir, to may I go start? abroad? Do you have to? Sir, may I start? Do you have to go abroad for your promotions or advertisement of your platform? No, I don't have to go abroad. I just have to go on Facebook. Yes, Mrs. Akif. Do you have to do home chores sometimes?
Yeah, sometimes once in a blue moon, but daily I have to make tea. Once in a week I have to make tea. Sometimes I have to prepare breakfast. I'm good at it. Like I can clothes, I can clean my room. I'm very organized. But actually I don't have to do all these things. And I don't want to spoil others people habit. आदत बिगड़ जाएगी. It's Do- better Okay, do not. you have to drop your family to your in-laws? No, I don't have to drop my wife at her home because mom and dad have died. So now she does not go very often. And if she has to go, they live on walking distance. So she goes on on foot. Yes. Do you have to, sir? Do you have to? Yes, Lubna Zafar. Do you have to? Assalamualaikum, Lubna here. Do you have make planning for before starting this course? Do you have to? Do you have made planning for this Do starting you of have this to, course? do you have to make any plan before starting this? Yes, I have to. I have to. I have to. I have to. I have to plan, and sometimes I have to plan during the course. In online learning, actually things are not predicted. You cannot predict what's going to happen. You cannot predict the thing. So you have to go with a backup plan. I always have a backup plan for you. That's why I always keep eyes on the strength of the classes, and I have to plan according to it. Yesterday there were only It three means students in the class. it Today means you go with flow. I go with the flow. It, it But means you use this strategy, you go with flow and go with the flow means student response. yeah, I see that the students are responding well. They are taking classes regularly. Don't disturb them. Let them study in their Mm. own time. But when I see that now the things are going out of control, loss and is going, where I can predict loss, I simply wind up that class because it's that's The- why I've told you I'm thinking of finishing discussion class. I cannot afford 16,000 rupees teacher and nobody is taking, only three students are sitting in the class. So It it's means better to, strength. It means strength matters a lot for huh? you. Yeah, of It course, in means online strength matters a lot. it Mm. does because I have to pay more than 1 point lakhs every month. So it's not a Mm. piece of cake. Mhm. But some When students like me, they don't have enough time, or sometimes they can't spare time for regular classes. What they do? they don't do that, they do nothing. We are not going to finish your this class like 9 to 10. We are just thinking Mm. of finishing discussion session after 10 Mm. and at 9 because right now you are taking this class, you are not a part of discussion. 8 to 9 you will have a Yes. discussion. 10 to 11 the students Mm. will have classes of skills, so they will be busy there. So from today onwards I think there may not be a discussion session 9 to 11. Just take your 9 to spoken class. 11 regularly, or only when you have a class? No, 9 to 10 you have a your spoken or grammar class, right? You have 9 two to of, 10, sir, only. and 8 to 9 you have a discussion class. Yes, sir. Don't remove the 10 to 11, Mm. 10 to 11 session. Discussion session. No, 10 to 11, yeah, discussion session. Oh, I'll see the strength today. Right now, there are only three students sitting in the class. Okay, sir. Mm. प्लीज रिमूव नहीं करिएगा क्योंकि And सर yes, 10 to 11 whoever- सर जिन स्टूडेंट्स के साथ इन क्लासेस होती हैं 10 to 11 डिस्कशन सेक्शन हैं तो
I don't take decision in one day. I take decision after observing for at least 12 days. I don't take decision in a hurry. Okay, sir. I Okay, keep sir. observing, then I decide. Okay, Abade, sir, where do you have to? Why do you have to? When do you have to? What do you have to? Sir, what do you have to? How do you have to? Please. Sir, its meanings are same. What do you have to buy for your kids, or do you have to buy for your kids? जमीन आसमान का फर्क है. आपको क्या खरीदना पड़ता है, क्या आपको खरीदना पड़ता है? नताशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सर दो क्वेश्चन मुझे आ रहा है, इसमें डू में भी और व्हाट में भी, इसमें क्या डिफरेंस होगा? नताशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करें नताशा. आपको मेरी आवाज, जी जी सर, अभी आई है और मैंने ये क्लास अभी ज्वाइन। आपकी जो क्लास है अभी, आपकी जो क्लास चल रही है वो स्पोकन क्लास चल रही है. मैं आपको मिस बुशरा के पास भेज रहा हूँ, वो ज्वाइन कर. अभी आपकी स्पोकन क्लास है मिस बुशरा के साथ, ज्वाइन कर. अच्छा, आपका अपना क्या मसला बता रही थी आप? हेलो सर। नताशा, आपकी अभी स्पोकन क्लास चल रही है, आप मिस बुशरा को ज्वाइन कीजिए. मेरी क्लास आपके साथ कल हो. ब्रेकआउट रूम से स्पोकन क्लास को ज्वाइन कीजिए. ठीक है. अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं ना, व्हाट डू यू हैव टू और डू यू हैव टू, व्हाट डू यू हैव टू और डू यू हैव टू, दोनों में फर्क है ना. एक में व्हाट क्या, और डू में सिंपल एक क्वेश्चन है, डू यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ता है. व्हाट डू यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ता है. डू यू हैव टू टेक क्लास, क्या तुम्हें क्लास लेनी पड़ती है. व्हाट डू यू हैव टू डू इन द क्लास, तुम्हें क्लास में करना क्या होता है. तो व्हाट टॉक्स अबाउट समथिंग, डू इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है ना. चले, Okay, sir. कोई और सवाल आ रहा है? वेयर सर, वेयर डू यू हैव टू, व्हेन डू यू हैव टू, हाउ मेनी क्लासेस डू यू हैव टू, हाउ मच टाइम डू यू हैव टू, वेयर डू यू हैव टू? Yes, sir. प्लीज. Sir, when do you have to take new session or new classes? मतलब आपको नई क्लासेस कब लेनी पड़ती है? सेम टाइमिंग पर लेता हूँ, लेकिन डेज अलग है. मंडे एंड वेडनेसडे आई हैव टू टेक न्यू क्लासेस. I have to attend my new session on Monday and Wednesday. Same timing. और सर अगर हम यूँ कहें कि when do you have to start new session? आप वह, हाँ, आपको अपना नया सेशन स्टार्ट कब करना है? When do you have to start? I am starting new session from 4th of March. 4th of March. But I am pegged in librarians. I am free in 7 to 8. So I may start my new session 7 to 9. And in the morning, I will start 10 to 12. 2 new groups I am starting. Sir, I we have- can say, how do you have to handle your kids? How do you have to, if someone say, I have to handle my kids, then someone asks us, how do you have to handle your kids? My kids, my wife is enough for them, right? So I don't have to handle them. When I leave my room, so they just come to me in a way that I have come from abroad. I have come from London. Like, it seems that I'm coming back from office when I go out from my room. So the way they meet me. Oh, Mama Sir, has can come. we? And they don't come in my room. Sir, They are used to that Baba is busy taking class. Sir, can Yes. we ask that who do you
have to make the food in your house. So can Who? we ask like this, who ऐसे from बोले, who? who has to prepare food in your home? Mostly Okay. my wife has to cook, but sometimes when there's What do any you have to? traditional dish, then mama has to prepare, like kofte, right? If there's any traditional dish, then mama has to prepare. Yes, next. Chale aage. Have got to or has got to. We can also use have to talk. We can also use have to talk about single obligation. हम have to का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं जब हम बात करते हैं सिंगल ऑब्लिगेशन की। सिंगल ऑब्लिगेशन से मुराद कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको एक मर्तबा निभानी है, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको एक मर्तबा निभानी है, आपको बार बार नहीं निभानी पड़ती। और याद रखें, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब इसका मतलब ये है कि आप जो है बेसिकली फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं। जैसे सर कल मैं क्लास नहीं लूंगी, क्यों सर? वो कल शादी में जा रहा है। एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको कल निभानी है। सर आई हैव टू गो इन वेडिंग सेरेमनी टुमारो, फ्यूचर आ गया। हैव टू ही बात कर रहा है फ्यूचर की, हैव टू प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है सिंगल ऑब्लिगेशन की। ऐसी जिम्मेदारी जो एक मर्तबा निभानी है। अगर बार बार निभानी है आई हैव टू, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बेटा हैव टू की एक और वेरिएशन बताइए आपको डिफरेंस पैदा करना है तो गॉट लगा लीजिए, जब ही लिखा हुआ है आगे। वी कैन ऑल्सो यूज एन एक्स्ट्रा वर्ड गॉट इन दिस स्ट्रक्चर। इट इज कॉमन इन इनफॉर्मल एंड एवरीडे स्पोकन इंग्लिश। इट इज कॉमन इन इनफॉर्मल and everyday spoken English. अब आप बताइए क्या करें? अब आप सोचे आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी जो एक मर्तबा निभानी हो। आपने जैसे आप नौकरी करती हैं, यू डू अ जॉब एंड इन योर ऑफिस यू से टू योर बॉस, what do you say to your boss? Sir, I want to go early today. Why? I have to go shopping. I have to take my child to the hospital. I have to take my child to the doctor. मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको एक मर्तबा निभानी है। तो आपने बॉस से कहा, सर आई हैव टू take my son to the hospital. He is quite ill. Sure, no problem. Go. I want to stop you. Go. ठीक है ना? बात समझ आ रही है? अब आप इसमें एक्स्ट्रा वर्ड गॉड लगाना चाहे तो लगाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। आई एम सॉरी, आई कांट स्टे एनीमोर। माफ कीजिएगा, मैं मजीद नहीं ठहर सकता। क्यों? खैरियत? आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना है। अभी डैड का फोन आया कि फौरन घर आओ। आई हैव टू गो नाउ। आई एम गोइंग टू लकी वन, मैं लकी वन जा रहा हूँ। क्यों? खैरियत? एक्चुअली आई हैव गॉट टू बाय अ फ्यू शर्ट्स। आई हैव गॉट टू बाय अ फ्यू शर्ट्स, मुझे कुछ शर्ट्स खरीदनी। ओके, नो प्रॉब्लम। टुमारो आई हैव टू टेक माय फादर टू द हॉस्पिटल। जनरली मुझे ऐसा नहीं करना होता, बट टुडे आई हैव टू डू दिस। I have got to buy a new laptop. मुझे नया लैपटॉप खरीदना है, but it's too expensive. Sir, it is similar to have to. We can use got, has got to. लगा ले, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप have to लगा ले, कोई मसला नहीं। आप have to लगा Okay, लेते sir. हैं। बट सर भी इसमें कैसे डिफरेंशिएट होगा सर कि ये सिंगल ऑब्लिगेशन है या हमें मतलब करना पड़ता है, वो जो आपने पहले हैव टू डू का बताया? सिचुएशन आपको समझाएगी, सिचुएशन आपको समझाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि मैंने जैसे भी आपसे बात करूं, बेटा आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कंटिन्यू योर क्लास। व्हाई सर? Beta, my son has fallen off the stairs and I have to take him to the hospital. अब बताइए कि सिंगल ऑब्लिगेशन है या रिपीटेड ऑब्लिगेशन है? सिंगल है सर। सर सिंगल है। बस सिचुएशन आपको
सिचुएशन आपको खुद समझा देगी कि ये सिंगल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है या रिपीटेड ऑब्लिगेशन की बात है। बट आपने तो सर वही यूज किया ना, आई हैव टू यूज किया आपने, आई हैव गॉट नहीं कहा। तो मैंने अभी आपसे ऊपर एक बात लिखी है ना, वी कैन आल्सो यूज एन एक्स्ट्रा वर्ड, गॉट एक्स्ट्रा वर्ड है, लगाना चाहे अच्छा सर, तो लगा लीजिए, अगर लगाने का दिल ठीक नहीं है। लगाइए, एक्स्ट्रा वर्ड है। और लगा लेगी तो फिर आपका जुमला इनफॉर्मल हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में ऐसा इस्तेमाल होता है। Excuse me, शायद गोट टू हम इकट्ठा लगा सकते हैं। हाँ गॉट टू इकट्ठा ही लगेगा बेटा। जी सर। I have got to talk to you. भाई जी, excuse me, I have to talk to you. Excuse me, क्या है? I have to talk to you. Please come in camera. मतलब I want to talk to you in private. ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं ना, तो मुझे आपसे बात करनी है। अब आप सोचोगे सर मैं वांट लगा लूं, सोच रहे हैं, किसी के दिमाग में आ रहा है? Want to talk to you. वांट आपकी चाहत है, हैव टू आपकी जिम्मेदारी है। मुझे आपसे बात करनी है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको एक मरतबा निभानी है। आपको ये देखना है कि ये आपकी जिम्मेदारी है या आप ऐसा चाहती हैं। आई हैव टू ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, मुझे लैंग्वेज क्लासेस में एडमिशन लेना है। बस मैंने बोल दिया मम्मा आई हैव टू ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, जिम्मेदारी है, फर्ज है। अब अगर इसी को आप अपनी चाहत में कन्वर्ट कर देंगे तो आप आई वांट में बोल देंगे, आई वांट टू ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, अभी आपकी चाहत है। तो ये डिपेंड आप पे कर रहा होता है कि आप बात को किस अंदाज से डिलीवर करना चाह रही है, क्या चीज आप सर ये ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव गॉट टू टेक एडमिशन इन लैंग्वेज क्लासेस, अगर एक्स्ट्रा वर्ड हम लगा ले तो सही रहेगा। बिल्कुल जबरदस्त। आई हैव गॉट टू टेक एडमिशन इन लैंग्वेज क्लासेस, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मुझे लैंग्वेज क्लासेस में एडमिशन लेना है भाई, कुछ नहीं हो सकता, इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शुक्र है मैं लैंग्वेज टीचर बन गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर भी बना। कभी कभार खुशी होती है लैंग्वेज टीचर बनने की, कभी कभी होती है। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, टाइम ही नहीं है। वरना there are various methods of improving teaching, but these days I'm going with the flow. But after Ramzan, after Ramzan you will see the change. We may change our pattern, format. I've been thinking of changing the format of classes. Yes. I'm sorry, I can't stay anymore. I have got to go. अच्छा, अब आप नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं। याद रखिए, अगर गॉट लगा दिया तो नेगेटिव बनाने का तरीका हैवंट और हैजंट से होगा। मुझे नहीं आपसे बात करनी, आई हैवंट गॉट टू टॉक टू यू, मुझे कुछ नहीं खरीदना। शी हैजंट गॉट टू बाय एनीथिंग राइट नाउ, उसे कुछ नहीं खरीदना, ऐसी दिमाग खराब है। वी हैवंट गॉट टू सेल आवर हाउस, हमें अपना घर नहीं बेचना है भाई। He hasn't got to go to Lahore, उसे लाहौर नहीं जाना है। Sarasi hasn't got to take an extra class. I haven't got to pay anything. Question कैसे बनेगा? जाना है आपको? Have you got to go? सारा को कुछ खरीदना है? Has Sarah got to buy anything? नहीं। तो have you got to meet Sarah? क्या आपको सारा से मिलना है? Where have you got to go? When have you got to take class? आपका भी Where have you got to take class? I've got to take class in the morning. Okay. सिंगल ऑब्लिगेशन है ये, जिम्मेदारी, ऐसी जिम्मेदारी जो आपको एक मर्तबा निभानी है, ठीक है ना? I haven't got to wake up early in the morning tomorrow. Why, sir? Because my son doesn't have to go to school. He goes 3 days in a week. तबाह कर देंगे पढ़ाई को। अब आ जाए, जब आपने गॉट टू लगा लिया तो अब और थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया आई हैव टू, और आई हैव टू के अंदर कितने मीनिंग्स आ रहे हैं आपके पास? 2। कौन कौन से? रिपीटेड ऑब्लिगेशन भी आ रहा है, सिंगल ऑब्लिगेशन भी आ रहा है। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। क्लियर?
मुझे जाना है, Yes, sir. मुझे जाना पड़ता है। फिर मैंने कहा अच्छा गॉट लगा लो, चलो जब गॉट लगा लोगे तो अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी मीनिंग छुपी हुई है? Single obligation. Single obligation. I have got to go, मुझे जाना है, मुझे जाना है। I gotta go. अब ये इसका मतलब ये नहीं है मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आओ वेरी इनफॉर्मल इंग्लिश की तरफ आ जाओ। अब गोरे ने हैव गॉट टू गो बंद करके क्या बना दिया? गोटा। Gotta. I gotta go. I gotta go. बोला गोरा यही बोलता है I gotta go. I gotta talk to you. Yes, Lubna. Yes, sir. हाथ उठाया, कोई सवाल? No, maybe by mistake I have raised my hand. Have you got to ask any question? मैंने सवाल, क्या आपको कोई सवाल पूछना है? Gotta ask question. No, I don't. No, No, I sir, have not to ask any question. I By haven't mistake, I have raised my hand. आप सवाल बना दें, जवाब दे दें। No, sir, I haven't got to. I haven't got to ask any question. Okay. Yes. Yes. अब देखिए she has to take class, उसे क्लास लेनी पड़ती है, उसे क्लास लेनी है। अब आप इसमें got लगाया तो क्या हो गया? She has got to take class. अब आप देखिए क्या हो गया? She gotta take class. She gotta, अब तमाम सब्जेक्ट के साथ आप gotta लगा सकते हैं। I gotta, she gotta, he gotta, they gotta, gotta. I gotta go. She gotta go. She gotta take class. I gotta buy a car. I gotta say something. I gotta say something. I gotta say something. I gotta say something. If you don't mind. Sure, I really don't mind. I gotta say something very important. Sure, I've been waiting. I've been waiting. What have you got to say? Just promise me that you will not mind. I promise you that I'm not going to mind. I'm not gonna mind. What have you got to say? Are you kidding me? No, I'm not kidding you. I really have got to say something very special. Are you sure? Yes. Say, what are you waiting for? I'm waiting for the right moment. I'm waiting for the right moment. And I've been waiting for it. And this is the moment. And I gotta say something very important. I gotta say 3 special words. Yes, please. You are stupid. What? You gotta say this thing. Oh yes. आगे चलिए, क्या गोरा का नेगेटिव बनता है? ये गोरे की आपने कॉन्वर्सेशन सुनी, गोरा कितनी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा होता है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता वो क्या क्या है। तो अब शायद आपको थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो। आज लिस्टिंग सुनी थी आपने, उसको बार बार सुने तो शायद आपकी कानों में कोई सुनने से आपके अंदर तब्दीली आए। देखिए वो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रही है। छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स आप एक रिकॉर्डिंग को 10 दफा सुन सकते हैं। कुछ बच्चों ने सॉल्व की है, फीडबैक भी शेयर किया। यस, gotta go। क्या गॉडा का नेगेटिव बन सकता है? नहीं। क्या गॉडा का क्वेश्चन बन सकता है? नहीं। लेकिन सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गॉडा का क्वेश्चन बन सकता है। वो कौन सी है सर? डू यू हैव टू गो, हैव यू गॉट टू गो। जब आपके पास ये सेंटेंस लिखा हो, डू यू हैव टू, हैव यू गॉट टू, आगे कोई भी वर्ब हो, डू यू हैव टू, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट में यू हो। डू यू हैव टू, हैव यू गॉट टू। अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे डू यू हैव टू गो, हैव यू गॉट टू गो, gotta go, gotta go, जाना है तुमको, जाओ, दफा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? gotta go,
Gonna say something? Gonna say something? क्या आपको कुछ कहना है? Gonna say something? No, I don't have to say anything. Okay, no problem. Yes. Any question बेटा? यहाँ तक कोई बात? असाइनमेंट नोट करें अपना। असाइनमेंट नोट करें। आप लोगों ने जो प्रेजेंट सिंबल के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई है, आई के ऊपर लिखी है, कुछ बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड भी किए। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये करना है कि उस प्रेजेंटेशन को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या मतलब सर? आपने आई लिखा है ना, आप उसको अगर मैं कहूँ शी कर दो, शी कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अमरीन ने लिखी है अपनी प्रेजेंटेशन और अमरीन ने कहा आई हैव गॉट टू, आई हैव गॉट टू, आई हैव गॉट टू, आई हैव गॉट टू। अब उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन कुछ यूं लिखी है, आई दिस इज अमरीन, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले अपना इंट्रोडक्शन भी दिया होगा। तो अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यूं लिखिए, बस यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। वेल आई हैव अ फ्रेंड नेम अमरीन, शी इज 17 years old, she is she is she is she is she has her daily routine is quite tough. She gets up early in the morning. अब आपने she, अब बीच में आपने has to भी आ जाएगा आपका। she has to she अब she हर चीज आप किस में लेकर आ रहे हैं? she आई को she में कन्वर्ट कर दें। तो अब आप क्या गलतियां करेंगे? अब आप ये गलतियां करेंगे कि लाजमी तौर पर आप जो है आप देखिएगा आप एस और एस की मिस्टेक करेंगे, ठीक है? तो वो गलतियों से आपको बचना है और 24 घंटे आपके पास, अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कीजिए और मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। उसमें अपना मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिएगा, नाम से कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल नंबर कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड वगैरह वगैरह। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? सर प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे है? आपने रूटीन के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई थी, अपनी लिखवाई थी मैंने? नो सर, एक हफ्ते बनाई थी। मैंने आपको दिया था एक असाइनमेंट, मैंने कहा था लिखना है ये आपको, नहीं लिखा ना? लिखा तो नहीं था। अरे वाह, नो सर, नहीं था लिखा वो, क्योंकि वो स्पोकन क्लास में भी मैम ने। वाह भाई वाह, पढ़ ली, सीख ली इंग्लिश। बेटा जिसने लिखी है उसको वो अब रिकॉर्ड करके मुझे 24 घंटों में भेजेगा। जिसने नहीं लिखी वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा जब मैं शेयर करना शुरू करूंगा, ठीक है ना? अभी आप देखिएगा मेरे पास आना शुरू हो गई, मैं भी Excuse me, sir. यस फ्री होकर You शेयर। have आपने अभी कहा है ना शर्म से पानी पाना, प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश सो आई कैन यूज फॉर माय will be assured इन्होंने यूज करनी है किसी और के लिए। yes, I have to use for my employees as well. मम्मी बताएंगे ये फोन क्या? I'm taking my class. मम्मी बताएंगे। let's call it a day. Join your skills classes or discussion. Allah Hafiz, tata, bye bye.